Hello dear students, how are you? I think you are very best. आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं. And also in this video we are about to study VT graph, velocity time graph for non-uniform accelerating motion. Velocity time graph for non-uniform accelerated motion. Okay beta, sir, what is the meaning of non-uniform accelerated motion? The big question. Non-uniform accelerated motion. What is the meaning of this statement? Okay beta, I want to tell you, if the change increment in velocity is irregularly in equal interval of time, you would not understood. आप समझे नहीं होंगे. See, in first second my velocity is 110 meter per second. In next 1 second my velocity is 20 meter per second. In next 1 second my velocity is 25 meter per second. In next 1 second my velocity is 37 meter per second. Trying to understand this. In every second my velocity change. Yes, it is right, but not change regularly. It is change irregularly. Anytime 10 to 20, that means to say change is 10. Anytime 20 to 25, that means to say change in 5. Anytime to 25 to 37, that means to say change 12. फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की चेंजिंग हुई, सेकंड सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की चेंजिंग हुई, थर्ड सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड की चेंजिंग हुई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इररेगुलरली चेंजिंग इन द वेलोसिटी विद द टाइम. The change in velocity, increment in velocity is irregularly with equal interval of time. In equal interval of time, हर equal interval of time में आपकी जो velocity में change हो रहा है वो irregular हो रहा है. वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रही है, यस, बढ़ तो रही है वेलोसिटी, बट रेगुलरली नहीं बढ़ रही है, इररेगुलरली. कभी थोड़ा बढ़ रही है, कभी ज्यादा बढ़ रही है, जबकि टाइम हमेशा सेम ले रही है. दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड motion. If you are a genius student, then you can understood the rate of change in velocity is constant. Sorry, not constant. वेलोसिटी में जो चेंज की जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है. आज मैंने 10 रुपीज कमाए, कल मैंने 77 रुपीज कमाए, परसों मैंने 55 नहीं 30 लेट्स कंसीडर 109 रुपीज कमाए, उसके बाद हमने 300 रुपीज कमाए. सो जो चेंजिंग हो रही है, मेरे इंक्रीमेंट जो हो रहा है मेरी अर्निंग मनी में, वो पर डे इररेगुलरली हो रहा है. कभी ज़्यादा, कभी और ज़्यादा, कभी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है कि 5, नेक्स्ट डे 10, नेक्स्ट डे 15, नेक्स्ट डे 20, ऐसा नहीं हो रहा है. सो दिस इज इररेगुलर इंक्रीमेंट, इररेगुलर चेंज इन वेलोसिटी. सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. Okay, and the graph here between the velocity and time is not straight line. That will not be straight line. इनके बीच जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. इनकी प्रोपोर्शनल है बट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, एक रेगुलरली प्रोपोर्शनलिटी नहीं दिख रही है, रेगुलरली प्रोपोर्शनलिटी आप कह सकते हैं. सो दिस इज मेन प्रॉब्लम हियर एंड इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन बिटवीन v and t. नाउ सी ट्रेस द ग्राफ. ओके बेटा, व्हाट विल बी? Now we see the graph between velocity time graph v and t for non-uniform motion, accelerated motion. Try to understand. This is time axis, this is velocity axis. Okay, and non-uniform accelerated motion. So time interval is same, but velocity change is not same.
So this is time t1 and velocity is v1. Time is same, velocity is this, increment. Now my velocity is same, time is same, but velocity is increment in velocity. Increment in velocity is not same. That is, increment is not same. ओके पहले वेलोसिटी v1 थी, फिर वेलोसिटी इतनी हो गई, बढ़ी, फिर वेलोसिटी बढ़ी, पहले अगर 10 थी 30 हो गई, 35 हुई, बढ़ी, बट उतना नहीं जितना पहले थी. नाउ ट्रेस द ग्राफ. Meet the lines. Triangle understood. Is graph a straight line? The VT graph for non-uniform motion, non-uniform accelerated motion is a straight line? No, this is a curve. This is a curve which shows, ये कर्व क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है that velocity is irregularly changed. Triangle understood. This time change, this time more change, this time less change. यहां इंक्रीज किया, यहां बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई वेलोसिटी, और यहां फिर थोड़ी कम इंक्रीज की इन कंपैरिजन टू द लास्ट टर्म. So for the non-uniform accelerated motion, velocity time graph is a curve. Okay beta, and at this time how can we calculate the acceleration? In non-uniform motion, well, in non-uniform motion, non-uniform accelerated motion beta, non-uniform accelerated motion, the VT graph is curve, at any point. If you draw the tangent, tan theta, altitude, let's A, B, C, AB upon BC. Okay, and what is this? Actually this is velocity. This is velocity and this is time interval, v upon t. It is change in velocity in time t. ये जो आप देख पा रहे हैं बेटा, this is change in velocity in timing t, change in velocity in timing t. So tan theta, this is change in velocity with respect to time, is called acceleration. ये जो आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया है फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्चुअली दिस इज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. व्हाट इज बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी.
instantaneous, what is beta? Instantaneous acceleration. This is okay. So now what is this? Change in velocity with respect to time. So what is this? Instantaneous acceleration. Okay, so at different point you take, that is different angle. जब आप किसी नेक्स्ट पॉइंट पर फिर से एक बार टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो एंगल अलग होगा. टेक अ ग्राफ, मतलब एक परपेंडिकुलर फिर से ले. नाउ tan theta dash, now altitude is this, altitude upon, and this is time interval, this is time interval. So that is like base, that is like base, this is behave like base, and altitude shows the change in velocity with respect to time. So this shows what? Change in velocity with respect to time, acceleration. Okay, so this is acceleration, this is tan theta dash, acceleration. ये acceleration show कर रहा है at this point at which you draw the tangent, जिस पर आपने क्या खींच रखा है? टेंजेंट खींच रखा है. यानी at the different point of the VT ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो आपने कर्व ट्रेस किया उसके डिफरेंट पॉइंट पर, जब आप अलग अलग पॉइंट्स पर जब आप कर्व टेंजेंट ट्रेस करेंगे तो वो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, जो ग्रेडियंट आएगा, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को शो करती है. ओके बेटा, so let's meet in next video with next topic. Goodbye, take care.